बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलियट्स व्यूज ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 मीनिंग ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। मेटाफिजिकल मफूकुल फितरत शायरी के मानी। नंबर 3 स्किल ऑफ जॉन डन, जॉन डन की महारत। नंबर 4 डॉक्टर जॉनसन एंड ड्राइडन। नंबर 5 17th सेंचुरी पोइट्री, 17वीं सदी की शायरी। नंबर 6 अ थॉट टू डन वाज एन एक्सपीरियंस, डन के लिए एक सोच, एक तजर्बा था। नंबर 7 मेटाफिजिकल पोइट्स और इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंग्लिश पोइट्री, मफूकुल फितरत शायर और इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेज़ी शायरी के मरकज़ी धारे में हैं। नंबर 8 कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। इलियट्स व्यूज ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स, इलियट की राय, व्यूज राय, और ये प्लूरल है आरा, ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स मफूकुल फितरत शायरों पर। इलियट की मफूकुल फितरत शायरों पर आरा। इलियट्स ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स, इलियट का मजमून द मेटाफिजिकल पोइट्स is one of the most significant critical documents of the modern age, is one of the most significant critical documents, इंतहाई अहम तनकीदी दस्तावेज़ात में से एक है, ऑफ द मॉडर्न एज, जदीद दौर की। He throws new light on the metaphysical poets, वो मफूकुल फितरत शायरों पर एक नई रोशनी डालता है। and shows that metaphysical poets are neither quaint nor fantastic, और जाहिर करता है कि मेटाफिजिकल पोइट्स ना तो अजीब हैं ना ही ख्याली, rather they are great and mature poets, बल्कि वो अजीम और पुख्ता शायर हैं। They do not represent a digression from the mainstream of English poetry. They do not represent, वो ज़ाहिर नहीं करते, a digression, तजावज़, from the mainstream of English poetry, अंग्रेज़ी शायरी के मरकज़ी धारे से तजावज़ ज़ाहिर नहीं करते। Rather they maintain a continuation of English poetry, बल्कि वो अंग्रेज़ी शायरी के तसलसल को बरकरार रखते हैं। For this purpose, इस मकसद के लिए, Eliot examines with suitable illustrations, Eliot मुआयना करता है with suitable illustrations, मुनासिब तशरीहात के साथ, the characteristics, खसूसियात की, which are generally considered metaphysical, जिनको आम तौर पर समझा जाता है मेटाफिजिकल, मफूकुल फितरत, वन बाय वन, एक एक करके। ही ऑब्जर्व्स फर्स्ट, वो मुशाहदा करता है फर्स्ट, पहले। देयर इज द एलेबोरेशन ऑफ अ सिमिली टू द फॉरदेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट टू बी मेट विद फ्रीक्वेंटली इन द पोएट्री ऑफ डन एंड काउले। देयर इज द एलेबोरेशन ऑफ अ सिमिली, सिमिली की तफसील का इस्तेमाल है, टू द फॉरदेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट, फॉरदेस्ट, दूर की मुमकिन हद तक, टू बी मेट विद फ्रीक्वेंटली, टू बी मेट मिलने के लिए, विद फ्रीक्वेंटली इन द पोइट्री ऑफ डन एंड कौले, डन और कौले की शायरी में अक्सर मिलने के लिए।
Secondly, he says, दूसरी बात वो कहता है that there is the device of the development of an image. वो कहता है कि एक डिवाइस है, एक तदबीर है ऑफ द डेवलपमेंट, तरक्की का, ऑफ एन इमेज, एक तस्वर के, एक तस्वीर के, अक्स के, बाय रैपिड एसोसिएशन ऑफ थॉट, सोच की एक तेज अंजमन के जरिए, रिक्वायरिंग कंसिडरेबल एजिलिटी, जिसके लिए एक काबिल गौर चालाकी, चुस्ती या तेजी की जरूरत होती है ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर, पढ़ने वाले की तरफ से. थर्डली, तीसरी बात, द मेटाफिजिकल पोइट्स प्रोड्यूस देयर अफेक्ट्स बाय सडन कंट्रास्ट्स. मेटाफिजिकल शायर प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं अपने असरात बाय सडन कंट्रास्ट्स, अचानक तजादात से. दस इन द लाइन बाय जॉन डन, जॉन डन से इस लाइन में, a bracelet of bright hair about the bone, एक कंगन या कड़ा of bright hair, चमकदार बालों का, about the bone, हड्डी के बारे में. ये लाइन ली गई है द रेलाइस में से. द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड, इंतहाई ताकतवर असर पैदा किया गया है, बाय सडन, अचानक, कंट्रास्ट ऑफ द एसोसिएशंस ऑफ ब्राइट हेयर एंड बोन, चमकदार बालों और हड्डी के की एसोसिएशंस के अचानक तजाद से पैदा किए गए हैं. इलियट सेज, इलियट कहता है that such telescoping of image, के तस्वीर की ऐसी दूरबीन, एंड कंट्रास्ट्स ऑफ एसोसिएशंस, और एसोसिएशंस के तजादात, आर नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ द पोइट्री ऑफ डन अलोन, सिर्फ डन की शायरी की खसूसियत नहीं है. इट आल्सो characterizes Elizabethan dramatists like Shakespeare, Webster, Turner and Middleton. It also characterizes, ये वसफ बयान करते हैं, also भी एलिज़ाबेथन के ड्रामा निगारों के, जैसा कि शेक्सपियर, वेबस्टर, टर्नियर एंड मिडल्टन के. So this suggests that Donne, Cowley and others belong to the Elizabethan tradition. इसलिए ये तजवीज़ करता है कि डन, कौले और दूसरे एलिज़ाबेथियन रवायत से तल्लुक़ रखते हैं, एंड नॉट टू एनी न्यू स्कूल, और किसी नए स्कूल से नहीं. The dominant characteristics of Donne's poetry are also the characteristics of the great Elizabethans. The dominant characteristics of Donne's poetry, डन की शायरी की गालिब खसूसियात, are also the characteristics of the great Elizabethans, अजीम एलिज़ाबेथन की खसूसियात भी हैं. So he is closer to Elizabethan than any new school. इसलिए वो एलिज़ाबेथियन के ज़्यादा करीब है किसी नए स्कूल की बजाय. Then Eliot takes up Dr. Johnson's famous definition of metaphysical poetry. फिर Eliot डॉक्टर जॉनसन की मशहूर तारीफ लेता है of metaphysical poetry की, in which he has tried to define this poetry by its faults, जिसमें उसने कोशिश की है to define this poetry, इस शायरी की तारीफ करने की, by its faults, इसकी खामियों से या नुकाइस से. डॉक्टर जॉनसन इन हिज आर्टिकल, डॉक्टर जॉनसन अपने मजमून में लाइफ ऑफ कौले में पॉइंट्स आउट दैट इन मेटाफिजिकल पोइट्री, निशानदेही करता है कि मेटाफिजिकल पोइट्री द मोस्ट heterogeneous ideas are yoked by violence together. इंतहाई मुखालिफ जिनस
ख्यालात जोड़े जाते हैं, बाय वायलेंस, ज़बरदस्ती से इकट्ठे जोड़े जाते हैं, मिलाए जाते हैं. दे ब्रिंग टुगेदर हेट्रोजीनियस आइडियाज़, वो मुखालिफ जिन्स ख्यालात को इकट्ठा करते हैं. एंड कंपेल देम इनटू यूनिटी, और उनको मजबूर करते हैं इत्तेहाद में. बाय द ऑपरेशन ऑफ द पोइट्स माइंड, शायर के जहन के ऑपरेशन के ज़रिए, यानी शायर के जहन के ऑपरेशन के ज़रिए इसे इकट्ठा करने पर मजबूर करते हैं. ही ऑब्जेक्ट्स that countless instances of such fusion of opposite and dissimilar concepts can be cited at random from all poets. He objects, वो एतराज़ करता है कि countless instances, बेशुमार मसाले, of such fusion, ऐसी अमेज़श की ऑफ अपोजिट एंड डिसिमिलर, अपोजिट मुखालिफ और जुदा कंसेप्ट्स, तसव्वुरात, कैन बी साइटेड, हवाला दिए जा सकते हैं, एट रैंडम, बेतरतीब, फ्रॉम ऑल पोइट्स, तमाम शायरों से. बट सच यूनिटी इज प्रेजेंट इवन द पोइट्री ऑफ जॉनसन हिमसेल्फ, लेकिन ऐसा इत्तेहाद मौजूद है यहाँ तक कि बजाते खुद जॉनसन की शायरी में. द फोर्स ऑफ डॉक्टर जॉनसन्स रिमार्क लाइज इन द फैक्ट, द फोर्स, कुव्वत, डॉक्टर जॉनसन के तबसरे की कुव्वत पड़ी है, इन द फैक्ट, इस हकीकत में, दैट द मेटाफिजिकल पोइट्स कुड योग, के मेटाफिजिकल शायर योग कर सकते थे, जोड़ सकते थे, मिला सकते थे, बाय वायलेंस डिसिमिलर आइडियाज, तशद्दुद मतलब ज़बरदस्ती से, डिसिमिलर जुदा गैर मुतशाबे आइडियाज़ को, ख्यालात को, ओनली सिर्फ, दे कुड नॉट यूनाइट देम और फ्यूज देम इनटू अ सिंगल होल, वो इन्हें एक कुल में मुत्तहिद या अमेज़िश नहीं कर सकते थे. बट दिस इज नॉट अ फैक्ट, लेकिन यह हकीकत नहीं है. इलियट सेज दैट अ नंबर ऑफ पोइट्स ऑफ दिस स्कूल, इलियट कहता है कि बड़ी तादाद में इस स्कूल के शायर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स के हैव एमिनेंटली सक्सीडेड, नुमाया तौर पर कामयाब हुए हैं, इन यूनाइटिंग हेट्रोजीनियस आइडियाज़ को आपस में मिलाने में, हेट्रोजीनियस मुखालिफ जिनस ख्यालात को आपस में मुत्तहिद करने में कामयाब हुए हैं. ही कोट्स फ्राम हर्बर्ट, काउले, बिशप, किंग, वो हवाला देता है हर्बर्ट का, काउले का, बिशप किंग का, एंड अदर पोइट्स, और दूसरे शायरों का, टू सपोर्ट हिज आर्गूमेंट, अपनी दलील की हमायत करने के लिए. Therefore he concludes that in the light of Dr. Johnson's definition, इसलिए वो नतीजा अखज़ करता है कि डॉक्टर जॉनसन की तारीफ की रोशनी में मेटाफिजिकल पोइट्री कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएटेड, मेटाफिजिकल पोइट्री में फ़र्क नहीं किया जा सकता फ्राम अदर पोइट्री, दूसरी शायरी से. द फॉल्ट विच डॉक्टर जॉनसन पॉइंट्स आउट इज़ नॉट देयर, वो खामी, वो नुक्स विच डॉक्टर जॉनसन पॉइंट्स आउट, जिसकी डॉक्टर जॉनसन निशानदेही करता है, इज़ नॉट देयर, वहाँ नहीं है. रादर द यूनिटी ऑफ हेट्रोजीनियस आइडियाज़ इज़ कॉमन टू ऑल पोइट्री, बल्कि मुखालिफ जिन्स ख्यालात का इत्तेहाद तमाम शायरी में आम है, मुश्तरका है. देन इलियट सेज, फिर इलियट कहते हैं, दैट डन एंड द अदर पोइट्स ऑफ द 17th century, के डन और 17वीं सदी के दूसरे शायर, वर द डायरेक्ट एंड नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ, बराह रास्त थे और आम तरक्की थे, ऑफ के
the precedent age, سابقہ دور یا زمانے کے, and that their characteristic virtue was something valuable, اور ان کی خصوصیت کی فضیلت was something valuable, کچھ قیمتی تھی, which subsequently disappeared, جو بعد میں غائب ہو گئی. ڈاکٹر جانسن has rightly pointed out, ڈاکٹر جانسن نے ٹھیک طور پر نشاندہی کی ہے that these poets were analytical, کہ یہ شاعر تجزیاتی تھے. they gave too much analysis, انہوں نے بہت زیادہ تجزیہ دیا, and dissection of particular emotional situations, and dissection اور تشریح, تجزیہ اور تشریح بہت زیادہ دی of particular emotional situations, مخصوص جذباتی صورتحالوں کی. but he has failed to see, لیکن وہ دیکھنے میں ناکام ہو گیا ہے that they could also unite the concepts, کہ وہ ان تصورات کو متحد کر سکتے تھے. they had analyzed into new wholes, جسے انہوں نے نئی کل میں تجزیہ کیا تھا. Eliot shows that their special virtue was the fusion of heterogeneous material into a new unity after dissociation. ایلیٹ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی خاص فضیلت was the fusion, آمیزش تھی, of heterogeneous, مخالف جنس مادے کی, into a new unity, ایک نئے اتحاد میں, after dissociation, جدا یا الگ یا جدائی کرنے کے بعد. in other words, دوسرے لفظوں میں, metaphysical poetry is distinguished from other poetry. metaphysical poetry کا فرق کیا جا سکتا ہے, نمایاں کی جا سکتی ہے, امتیاز کیا جا سکتا ہے from other poetry, دوسری شاعری سے, by unification of sensibility, ادراک کے اتحاد سے. but later, لیکن بعد میں, unfortunately, dissociation of sensibility overtook English poetry. لیکن بعد میں بدقسمتی سے جدائی یا علیحدگی نے, of sensibility, ادراک کی جدائی یا علیحدگی نے انگریزی شاعری کو جا لیا. Eliot says, Eliot کہتا ہے that the great Elizabethans and early Jacobians had developed a unified sensibility. Eliot کہتا ہے کہ عظیم Elizabethans نے اور ابتدائی Jacobians نے had developed, ترقی دی تھی, ایک متحدہ ادراک کو, sensibility کو, which is expressed in their poetry, جس کا اظہار ان کی شاعری میں کیا گیا ہے. by sensibility, Eliot does not merely mean, ادراک سے Eliot محض یہ مطلب نہیں لیتا feeling, احساس, اور the capacity یا صلاحیت to receive sense impressions, شعور کے تاثرات وصول کرنے کی صلاحیت. he means much more than that, وہ اس سے کچھ زیادہ معنی لیتا ہے, مطلب رکھتا ہے. by sensibility, ادراک سے, he means a synthetic faculty, اس کا مطلب ایک ترکیبی صلاحیت ہے. a faculty which can amalgamate, ایک ایسی صلاحیت which amalgamate, جو ملا سکتی ہے, and unite thought, اور سوچ کو متحد کر سکتی ہے, and feeling اور احساس کو, which can fuse the varied and disparate into a single whole, جو آمیزش کر سکتے ہیں مختلف اور بے جوڑ کو, into a single whole, واحد یعنی ایک ہی کل میں, often opposite and contradictory experiences, اکثر مخالف
opposite مخالف and contradictory اور متضاد experiences تجربات. The Elizabethans had such a rich sensibility. Elizabethan such a rich sensibility, ایسی زرخیز قسم کا sensibility شعور رکھتے تھے, احساس رکھتے تھے. They were widely read, learned. They were widely read. وہ وسیع پیمانے پر پڑھے جاتے تھے, learned, سیکھے جاتے تھے. They thought on what they read. وہ سمجھتے تھے on what they read. جس پر وہ پڑھتے تھے اسے سمجھتے تھے. Consequently their thinking. نتیجتاً اس لیے ان کی سوچ and learning modified their mode of feeling. اور ان کے لرننگ نے, سیکھنے نے modified, درست کر دیا their mode of feeling. ان کے احساس کے انداز کو درست کر دیا. Then Eliot gives concrete arguments. پھر ایلیٹ ٹھوس دلائل دیتا ہے to show, ظاہر کرنے کے لیے that such unification of sensibility, کہ ایسا اتحاد, sensibility, احساس کا, شعور کا, سمجھداری کا اتحاد, and such fusion of thought, اور سوچ کی ایسی آمیزش, and feeling اور احساس is also found in the poetry of Donne. ڈن کی شاعری میں بھی پایا جاتا ہے, as well as in much of modern poetry, اور اس کے ساتھ ساتھ جدید شاعری میں بھی. But it lacks in the poetry of Tennyson. لیکن ٹینیسن کی شاعری میں اس کی کمی ہے. ایلیٹ observes, ایلیٹ مشاہدہ کرتا ہے, دیکھتا ہے that after Donne and Herbert, کہ ڈن اور ہربرٹ کے بعد a sort of change came over English poetry, انگریزی شاعری پر ایک قسم کی تبدیلی آ گئی. These poets lost the ability of uniting thought and feeling. ان شاعروں نے lost the ability, قابلیت کو کھو دیا, of uniting thought, سوچ کو متحد کرنے کی اور احساس کو متحد کرنے کی قابلیت کو کھو دیا. The unification of sensibility, سمجھداری کا اتحاد, was lost and a dissociation of sensibility set in. The unification of sensibility was lost and a dissociation of sensibility set in. اور سمجھداری کی جدائی یا علیحدگی شروع ہو گئی. After that, the poets can either think or feel. اس کے بعد شاعر یا تو سوچ سکتے ہیں یا محسوس کر سکتے ہیں. There are either intellectual poets, یا تو دانشور شاعر ہیں, who can think only, جو صرف سوچ سکتے ہیں, اور there are poets, یا ایسے شاعر ہیں who can feel only, جو صرف محسوس کر سکتے ہیں. But not both at the same time, لیکن ایک ہی وقت میں دونوں نہیں. The poets of the 18th century were intellectuals. 18ویں صدی کے شاعر دانشور تھے. They could think, وہ سوچ سکتے تھے, but could not feel, لیکن محسوس نہیں کر سکتے تھے. The romantics of the 19th century, 19ویں صدی کے رومانوی, could feel, محسوس کر سکتے تھے, but could not think, لیکن سوچ نہیں سکتے تھے. Tennyson and Browning can merely reflect or ruminate on their experience. Tennyson اور براؤننگ محض سوچ سکتے ہیں یا غور و فکر کر سکتے ہیں on their experience, اپنے تجربے پر, but cannot express it poetically, لیکن شاعری کے طور پر اس کا اظہار نہیں کر سکتے, شاعرانہ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. They do not feel, وہ محسوس نہیں کرتے, their thought, اپنی سوچ کو, as immediately as the odor of a rose, اتنا فوری طور پر جتنا کہ گلاب کی خوشبو. but لیکن
A thought to Donne was an experience. Donne के लिए एक सोच, एक तजर्बा थी. It modified his sensibility. इसने उसके इदराक या हिस या समझ की इस्लाह कर दी. When a poet's mind is perfectly equipped for its work, जब एक शायर का जहन मुकम्मल तौर पर आरास्ता होता है इसके काम के लिए, it constantly amalgamates disparate experience. तो ये constantly मुस्तकिल तौर पर मिलाता है disparate बेजोड़ मुख्तलिफ तजर्बे को. The ordinary man's experience is chaotic. आम आदमी का तजर्बा chaotic होता है, बेतरतीब होता है, irregular बेकायदा and fragmentary होता है और टुकड़े टुकड़े होता है. If the poet like Donne falls in love, अगर डन जैसा शायर मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और रीड्स स्पिनोजा या स्पिनोजा को पढ़ता है और एक्सपीरियंसेस द नॉइज ऑफ द टाइपराइटर या टाइपराइटर के शोर का तजर्बा करता है और द स्मेल ऑफ कुकिंग या खाना पकाने की स्मेल का तजर्बा करता है, दो these experiences have nothing to do with each other, अगरचे इन तजर्बात का एक दूसरे के साथ कुछ करना कुछ लेना देना नहीं है, कोई तअल्लुक़ नहीं है. Yet in the mind of the poet these experiences are always forming new holes. अलबत्ता शायर के जहन में ये तजर्बात हमेशा बना रहे होते हैं न्यू होल्स, नई कुल. In other words, दूसरे लफ्ज़ों में the metaphysical poets had a unified sensibility. Metaphysical poets had a unified एक मुतहिद अदराक या हिस या समझदारी रखते थे, मुतहिद समझ रखते थे, which enabled them to assimilate and diffuse the most disparate and heterogeneous experiences into new wholes. The metaphysical poets had a unified sensibility which enabled them, जिसने उन्हें काबिल बना दिया to assimilate मिलाने और पिघलाने के the most disparate and heterogeneous experiences, इंतहाई बेजोड़ and heterogeneous और मुखालिफ जिन्स तजर्बात को into new wholes, नई कुल में. They could feel their thoughts as intensely, वो महसूस कर सकते थे अपने ख्यालात को इतनी शिद्दत से as the odor of a rose, एक गुलाब की खुशबू की तरह. That is to say, ये कहा जाता है they could express their thoughts through sensuous imagery, कि वो अपनी सोचों का इजहार कर सकते थे अपनी हिस्सी इमेजरी के ज़रिए, सूरतों के ज़रिए. In his poems, अपनी नज़मों में Donne expresses his thoughts and ideas, अपनी सोचों और ख्यालात का इजहार करता है by embodying them in sensuous imagery, इन्हें हिस्सी इमेजरी में, सूरतों में अमली इजहार करके. And it is mainly through the unification of sensibility, और ये ज़्यादातर सेंसिबिलिटी, अदराक या समझदारी के इत्तेहाद के ज़रिए है that the imagery finds its appropriate expression, के imagery finds its appropriate, अपना मुनासिब इजहार ढूंढ लेती है, पा लेती है. Then Eliot proceeds to examine the close similarity between the age of Donne and the modern age. फिर Eliot आगे बढ़ता है to examine, मुआयना करने के लिए the close similarity, करीब मुशाहबत, करीबी यकसानियत between the age of Donne
ڈن اور جدید دور کے درمیان. He observes the consequent similarity. وہ consequent بعد کی similarity مشابہت یا یکسانیت کا مشاہدہ کرتا ہے between the sensibility of the metaphysical and the modern poets. میٹافزیکل اور جدید شاعروں کے ادراک یا سمجھداری کے درمیان. The metaphysical are difficult, and the poet in the modern age is also bound to be difficult. Metaphysical are difficult. Metaphysical مشکل ہیں and the poet in the modern age اور جدید دور میں شاعر is also bound بھی پابند ہے to be difficult مشکل ہونے کا. Therefore the modern poet also uses conceits. جدید شاعر بھی خود بینی کو استعمال کرتا ہے and the methods much similar to those of the metaphysical اور methods much similar بہت زیادہ ملتے جلتے طریقے to those of metaphysical poets والے like metaphysical poets metaphysical شاعروں کی طرح the modern poet also transmutes his ideas into sensations. اپنے خیالات کو also transmutes تبدیل کرتا ہے into sensations احساسات میں and transforms his feelings into thoughts اور اپنے احساسات کو سوچوں میں تبدیل کر دیتا ہے. In other words دوسرے لفظوں میں Eliot wants to say Eliot کہنا چاہتا ہے that Donne and the other metaphysical are in the mainstream of English poetry. کہ ڈن اور دوسرے میٹافزیکل شاعر اور ہیں ان دا مین اسٹریم مرکزی دھارے میں آف انگلش پوئٹری انگریزی شاعری کے مرکزی دھارے میں ہیں. اینڈ دا ماڈرن پوئٹس آر دیئر ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس اور جدید شاعر ان کے براہ راست ان کی نسل ہیں. دس اسٹریم فلوز ڈائریکٹ فرام دی ایلزابتھن ایج رائٹ اپ ٹو دا ماڈرن ایج. یہ دھارا بہتا ہے براہ راست ایلزابتھن کے دور سے ٹھیک موجودہ دور تک. اونلی اینڈ انفارچونیٹلی صرف اور بدقسمتی سے دس کنٹینیوٹی واز یہ تسلسل تھا بروکن ٹوٹ گیا تھا یہ تسلسل ٹوٹ گیا تھا فار اے شارٹ ٹائم تھوڑے وقت کے لیے انڈر دی انفلوئنس آف ملٹن اینڈ ڈرائیڈن ملٹن اور ڈرائیڈن کے اثر کے تحت who are great masters of language جو زبان کے عظیم استاد ہیں but not of the soul لیکن روح کے نہیں. thus Milton broke the tradition of English poetry. اس طرح ملٹن نے انگریزی شاعری کی روایت کو توڑ ڈالا. The poet has different faculties and sensibilities. شاعر مختلف صلاحیتیں رکھتے ہیں اور سمجھ رکھتے ہیں ادراک رکھتے ہیں. He must try to achieve unification of his sensibilities. اسے لازمی طور پر کوشش کرنی چاہیے to achieve حاصل کرنے کی unification of his sensibilities اپنے ادراک کو متحد کرنے کے لیے اپنے ادراک کے اتحاد کو حاصل کرنے کے لیے. and must try to express this unified sensibility and must try اور کوشش کرنی چاہیے to express this unified sensibility اس متحد ادراک کو ظاہر کرنے کی in his poetry اپنی شاعری میں. یونیفیکیشن اتحاد یونیفائڈ متحد. only such poetry would be complete صرف ایسی شاعری مکمل ہوگی but it would be complex لیکن یہ پیچیدہ ہوگی and difficult اور مشکل ہوگی. though the metaphysical اگرچہ metaphysical مافوق الفطرت as well as the moderns اس کے ساتھ ساتھ جدید have this complexity
یہ پیچیدگی رکھتے ہیں. Yet they also have completeness and maturity. البتہ وہ تکمیل، مکمل ہونا، کمپلیٹنس تکمیل اور پختگی بھی رکھتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے ساتھ ہی ایلیٹس ویوز آن میٹافزیکل پوئٹس کا کوشچن ختم ہوتا ہے. تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.